Students, today's class is the second class of electrostatics level 1. तो in last class by electrostatics ର first class रे आमे चार्ज और coulombs लो discussions करथिले. coulombs लो रो आमे formula पाइथिले F equal beta q1 q2 by r square. तापरे coulombs law को वेक्टर फॉर्म रे भी डिस्कशन करथिले. देन coulombs law ग्रेविटेशनल फोर्स भितर ଗୋଟେ कंपैरिजन करिकि माने मोटा मोटी बेसिक फंडामेंटल गुडा को 10th लेवल जिंस गुडा को डिस्कशन हेची हमरो क्लास 1 रे. तो क्लास 2 रे हमें coulombs फार्मूला ऊपर किछि न्यूमेरिकल्स आरंभ करबा. वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स. जेहेतु coulombs फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक गोटे फोर्स तेणु इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सो न्यूमेरिकल्स गुड़ा करे वेक्टर एडिशन टिके दरकार पड़ो जहाँ कि तुम क्लास 11th रे वेक्टर एंड वेक्टर एडिशन भल भाव पढ़िछ. जेहेतु सेकेंड ईयर रे वेक्टर एडिशन बहुत थर दरकार पड़ो तेणु मु सर्टकट रे ताको रिवीजन कर दूची. सो कौन पढ़िछ क्लास 11th रे? क्लास 11th रे फर्स्ट पढ़िल इफ टू वेक्टर्स और टू फोर्स F1 is equal to 6 Newton, F2 is equal to 4 Newton, one body ऊपर act करुची and the force are in same direction. Okay, look at this is a body. This body ऊपर F1 6 Newton, F2 4 Newton. Two vectors or two force are acting in same direction. In this case, how much is the net force or how much is the total force? We say 10 Newton. But same situation, body upare if 6 Newton and 4 Newton एमिति act करे तो net force केते कहउचे हमें 6 minus 4 is equal to 2 Newton. So vector addition ro first conclusion hochi if two vectors are in same direction then resultant is given by r vector is equal to a vector ro magnitude plus b vector ro magnitude. R vector ro magnitude is equal to a vector ro magnitude plus b vector ro magnitude. Similarly, if two vectors A and B are acting in opposite direction, then resultant vector magnitude is equal to either A vector magnitude minus B vector magnitude or B vector magnitude minus A vector magnitude. Similarly, two vector एमिति न है कि if some angle act करिवे resultant कौन हबो. That is also we have to recall. Okay. अच्छा ताकू रिकॉल करबा पूर्व फर्स्ट आमे दिस कांसेप्ट ऊपर गोटे न्यूमेरिकल बा गोटे क्वेश्चन कर दबा. दिस कांसेप्ट ऊपर वेरी सिंपल न्यूमेरिकल व्हाट इज द क्वेश्चन. लोक एट पिला माने जेबे भी क्वेश्चन आसीबो निश्चित भावे सॉल्यूशन को जीवा पूर्व वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन टा को ट्राई मारिबो. क्वेश्चन को बहुत भल भाव ट्राई कला परे माने पढ़िबो बुझिबो चेष्टा करिबो फुल ट्राई कला परे सॉल्यूशन को जाउथबो माने वीडियो को आगो को नोथबो. ओके, सो नाउ लिसन टू द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज 2 point charge 10 coulomb and 30 coulomb are at a distance 4 meter. Locate a point where no force act on any charge present at that point. Now pause the video and try the question. Okay, now solve करूचे देखो कौन कोची 2 point charge 10 coulomb 30 coulomb are placed at a distance of 4 meter. कितना मीटर कोची 4 meter. So कौन कोची locate a point where no force act on a charge present at that point. Look at कोची एमिति गोटे पॉइंट फाइंड करो जो पॉइंट रे एनी चार्ज प्लेस कले there will be no force on that charge.
माने जो भी पॉइंट रे मुझे गोटे चार्ज को प्लेस करी 10 कूलम ता ऊपर गोटे फोर्स डेवलप करिवो 30 कूलम भी ता ऊपर गोटे फोर्स डेवलप करिवो इफ बोथ फोर्स एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड becomes equal then the net will be zero. So obviously the point will be in between these 2 points A and B. लाइन को जॉइन करूची दिस लाइन ऊपर से पॉइंट रहिबो जो पॉइंट रे की एनी चार्ज फोर्स प्लेस कले नेट फोर्स जीरो हो P is the required point, that is the null point. Means if we place any charge on point P, then the net force on that charge will be zero. Let point P is at a distance x from charge A. So automatically it becomes at a distance 4 minus x from charge B. Now let a charge Q is placed at P. P point रे गोटे चार्ज Q को रखिले. Now चार्ज Q पर 10 कूलम गोटे फोर्स पकेबो ताको लेट मु FA ना देली. So force on Q due to 10 कूलम जाको मु FA ना देबी. How much of FA? Coulomb's law formula beta Q1 Q2 by R square. Beta Q1 माने 10 Q2 माने Q by R square. R square means x square. Direction कौन होगा ना एठी मु पॉजिटिव चार्ज पकोची ये भी पॉजिटिव अछि सो 10 कूलम तक रिपेल करिवो सो डायरेक्शन होगा along AP. Similarly force on Q due to 30 कूलम चार्ज ताको लेट FB वेक्टर ना देबी FB वेक्टर ना देले FB वेक्टर इज इक्वल कोन आछि बीटा Q1 माने 30 Q2 माने Q by R square means 4 minus x रो स्क्वायर डायरेक्शन कोन हबो along एटी पॉजिटिव चार्ज पुट कली ये भी पॉजिटिव सो स्पिया रिपेल करिवो रिपेल कले कोन हबो along BP हबो. ओके now clearly FA vector और FB vector opposite direction रे act कला because one is along FP other is along BP opposite direction रे act कला तो opposite direction रे act कला माने net zero हेबा पे कोन दरकार आर magnitude और आर magnitude सेम हेबा दरकार so P point ता null point हबो if FA रो magnitude जो FP रो magnitude सेम हबो this implies कोन लिखि परिमु beta 10q by x square is equal to beta 30q by 4 minus x square. This implies cancellation rate beta q 10 30 so finally 1 by x square is equal to 3 by 4 minus x whole square. This implies cross multiplication कले पाइबी okay cross multiplication कले कौन पाइले देखो this implies cross multiplication रे 4 minus x रो whole square by x square is equal to 3 by 1. Cross multiplication रे कौन हला देखो 4 minus x रो whole square by x square is equal to 3 by 1. ना आपको सॉल्व करके x आनिबा होचे हमर काम as per the question ना आपको सॉल्व करिया पे जदी मैं आपको ओपन कर देबी ताले एटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसी कि सॉल्विंग कष्ट हबो तेणु ओपन न करी बोथ साइड रूट ओवर बाहर करबी मन रख एमितिया सिचुएशन रे बोथ साइड रूट ओवर बा स्क्वायर रूट बाहर करबो बोथ साइड स्क्वायर रूट बाहर करले कोन पाइबी 4 minus x by x is equal to root 3 by 1. सुनो रूट ओवर प्लस की माइनस नहीं पारबी बट माइनस जगह मु काहे रिजेक्ट करछि ना एक्स्ट्रा जेहेतु गोटे डिस्टेंस टा जो मीनिंग रे x मु नेइछि सेठी एक्स्ट्रा के भी नेगेटिव हे परबनी पॉजिटिव ही हबो तेणु मु नेगेटिव पार्ट टा रूट ओवर रिजेक्ट करके ओनली पॉजिटिव पार्ट गुडा नेली देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तमे x पाई जिवो x जहा आसीबो 10 कूलम रु सेति की डिस्टेंस रे नल पॉइंट अछि दैट पॉइंट रे एनी चार्ज को प्लेस करो नेट फोर्स will be 0. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. Now we will discuss
if two vectors are acting at an angle theta, then how can we find its resultant? Just now I discussion kale two cases, vectors acting in same direction, opposite direction, जोटा is very easy. Now if two vectors some angle theta re thibo, then how can we find resultants? For example, look at this is origin, a body is present at origin, then एमिति गोटे force F1 10 Newton act kala in this direction. Similarly, another force F2 10 Newton act kala in this direction. This angle is 45 degree and this angle is 45 degree. So how can we find the resultant of these two vectors? It may be any angle. Okay, 45 degree mu dechi, you think any angle. Fine, this is true. एवेदिका केस रे resultant find करिया पे class 11th रे we have discussed two methods. One is direct formula using the formula r is equal to root over a square plus b square plus 2ab cos theta and tan alpha is equal to b sin theta by a plus b cos theta. Other is component method, addition of vectors by component method. Component method is little better than the formula method. So mu तुमको revise करिबी how two vectors are added by component method. Vectors गुड़ा को component method रे add करिया पे first step रे we have to find x component and y component of all vectors. जो जो वेक्टर को तुम ऐड करबा को चाहछो सब गुडा कर x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट फाइंड करो. स्टेप 2 रे सब x कंपोनेंट गुडा को ऐड करके रिजल्टेंट x कंपोनेंट फाइंड करो एंड सब y कंपोनेंट गुडा ऐड करके रिजल्टेंट y कंपोनेंट फाइंड करो. लेट रिजल्टेंट x कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करबा rx, रिजल्टेंट y कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करबा ry. सो रिजल्टेंट रे x कंपोनेंट पाई गले और रिजल्टेंट रे y कंपोनेंट पाई गले. ताले रिजल्टेंट केमिति पाइबा नै x कंपोनेंट और y कंपोनेंट मिलिला सही क्लास 11th रे को आइतिला रिजल्टेंट r इज इक्वल टू कोन हबो रूट ओवर rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर हबो. एमिति यू कैन गेट द रिजल्टेंट. Very simple. All vectors को x component रे रिजॉल्व करो, all vectors को y component रे रिजॉल्व करो, then x component को ऐड करके rx फाइंड करो, y component को ऐड करके ry फाइंड करो, then resultant r is equal to root over rx square plus ry square करबा. Let this method रे हमें this question को solve करबा. This method रे this question को यदि solve करबा कोन होची देखो, another गोटे फिगर देखौची origin F1 टा केमिति पडुची, F1 टा एमिति पडुची, this is F1 10 Newton making angle 45 degree. Similarly F2 टा एमिति एक्ट करची बॉडी ऊपर, F2 making F2 is equal to 10 Newton making angle 45 degree. We want to find the resultant. So first step कौन कहूची, find x component and y component of all vectors. Here two vector f1 and f2. So f1 रो x component and y component को पटे हबो. Look at interestingly f1 रो x component a पटे हबो, y component a पटे हबो, whereas f2 रो x component this side रे हबो and y component b this side रे हबो. Class 11th रो conclusion. Now f1 रो this component how much हबो? Look at this angle is 45 degree. So this is the opposite angle. This is 45 degree. Now this is 90 degree. X axis, y axis. So this is 90 degree. 45 degree gala means this is 45 degree. Similarly, this will come 45 degree. This also comes 45 degree. Now f1 रो x component केता हबो? Class 11th concept through f1 cos 45 and f1 रो y component कौन हबो? f1 sin 45. Similarly here f2 रो x component एमति हबो f2 cos 45 and y component एमति हबो f2 sin 45.
माने स्टेप 1 कवर हैला फाइंड x कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स एंड y कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स नाउ स्टेप 2 कोन कहूची फाइंड रिजल्टेंट x कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट y कंपोनेंट माने सब गुडा x कंपोनेंट को ऐड करो सब गुडा y कंपोनेंट को ऐड करो सो रिजल्टेंट x कंपोनेंट कोन आछी रिजल्टेंट x कंपोनेंट देखो कोन आछी x एक्सिस पटे कोन अछि f2 cos 45 राइट को अछि f1 cos 45 लेफ्ट को अछि f2 रो भी मैग्नीट्यूड 10 f1 रो मैग्नीट्यूड 10 सो कोन आसिला 10 cos 45 डिग्री राइट को हैला 10 cos 45 डिग्री लेफ्ट हैला 2 इक्वल एंड ऑपोजिट हैला ना नहीं x कंपोनेंट सो रिजल्टेंट ऑफ x कंपोनेंट विल बी y रिजल्टेंट ऑफ y कंपोनेंट कोन हबो रिजल्टेंट ऑफ y कंपोनेंट रे देखो f1 रो y कंपोनेंट जो पटे अछि f2 रो भी y कंपोनेंट सही पटे अछि सो f1 sin 45 प्लस f2 sin 45 हबो f1 डा भी 10 सो f2 डा भी 10 सो इडा हला 10 sin 45 इडा हला 10 sin 45 सो रिजल्टेंट y कंपोनेंट ता कोन हबो जेहेतु दुईटा 10 sin 45 डिग्री सेम डायरेक्शन रे अछंती सो ऐड करिबा this implies ry is equal to केते हला 10 sin 45 माने 10 by root 2 plus here 10 sin 45 माने 10 by root 2 is equal to what is coming okay 10 by root 2 is equal to 5 root 2 plus 10 by root 2 is equal to 5 root 2 is equal to coming 10 root 2 so resultant y component is coming 10 root 2 and obviously it is Newton second step sarla finding resultant x component and finding resultant y component so x component ro add करके resultant x component पाइबो so y component रो add करके resultant y component पाइबो then next step बा third step को जिबा finding resultant केमि फाइंड करबा rx जानि हला ry जानि हला माने resultant r is equal to rx square plus ry square is equal to rx तो 0 आछि so कोन आसिला ry आसिगला rx जगह 0 पकले कोन आसिगला ry आसिगला सो रिजल्टेंट कोन हला ry सहित सेम हला दिस इंप्लाइज रिजल्टेंट कोन आसिला रिजल्टेंट ry माने केते अछि 10 रूट 2 न्यूटन अछि एंड को डायरेक्शन रे अछि डाउनवर्ड अछि बट टुवर्ड्स साउथ अछि कहि परबा 10 रूट 2 न्यूटन एमिति अछि ओके जदि एटा तमे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नो टुवर्ड्स साउथ कहबा सो कंपोनेंट मेथड रे वेक्टर ऐड कले बहुत एडवांटेज अछि काहे ना फार्मूला मेथड रे ओनली 2 वेक्टर ऐड कर परिबा बट कंपोनेंट मेथड रे हम 2 3 4 5 एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स ऐड कर परिबा एंड के इजी हबो एज कंपेयर्ड टू फार्मूला नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट द नोट नाउ पॉज द वीडियो and write the note. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. Now listen to another question. 3 charges each 10 coulomb are present on the vertices of an equilateral triangle of side 20 cm. Find net force on any charge due to other two charges मु कहिछि पॉज करिवो ट्राई करिवो सो पॉज द क्वेश्चन एंड ट्राई नाउ लुक एट कोन कहूछि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 cm कहिछि एंड every vertex रे 10 coulomb charge is present every vertex रे 10 coulomb charge is present साइड रो लेंथ उडा 20 cm कहिछि तक हमें बिगिनिंग रो मीटर करके पकेबा बिकॉज़ चार्ज उडा को कूलम रे अछि सो डिस्टेंस उडा को मीटर कर देबा ऑल विल बी SI यूनिट देन पचरछि find net force on any charge due to other two charges माने this 10 coulomb ऊपरे B और C मिसी कि how much force पकाउचंती ओके कोन कोची find net force on any charge due to other two charges means 10 coulomb ऊपरे B 10 coulomb और C 10 coulomb केते force पकाउचंती टोटल सिमिलरली B ऊपरे A and C how much force पकाउचंती
सी ऊपर ए और बी मिसिकी हाउ मच फोर्स पकाउछंती जेहेतु इक्विलेटरल ट्रायंगल तेणु ए ऊपर टोटल फोर्स जहाँ आसो बी ऊपर भी से आसो सी ऊपर भी से आसो तेणु आम गोटे ए ऊपर फाइंड करवा कौन फाइंड करवा 10 कूलम चार्ज ए ऊपर 10 कूलम ऊपर बी 10 कूलम और सी 10 कूलम मिसिकी टोटल फोर्स हाउ मच पकाउछंती लुक एट बी ए ऊपर फोर्स पकेबो रिपल्सिव फोर्स पकेबो दिस डायरेक्शन रे सी भी ए ऊपर रिपल्सिव फोर्स पकेबो दिस डायरेक्शन रे सो लुक एट इफ दिस पॉइंट मु ए ने बी एंड ताको ओरिजिन भली भाबी की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करिवि नाउ बी ए ऊपर फोर्स टा जो पकोजी केमिति पकेबो दिस डायरेक्शन रे पकेबो जेहेतु रिपल्सिव एंड लेट ताको ना देली एफ बी सी बी ए ऊपर जो फोर्स टा पकोजी केमिति पकेबो एमती पकेबो ओके जेहेतु सेटा सी एमती पकोची एंड ताको ना देली एफ सी ओके सी ए ऊपर रिपल्सिव फोर्स एमती पकेला बी ए ऊपर रिपल्सिव फोर्स एमती पकेला एफ बी एफ सी ना देली ना एंगल गुडा कौन हम एंगल गुडा कौन हम लोक टिके ड्रा करके देखा पड़े एंगल गुडा कौन हम ना लोक इक्विलेटरल ट्रायंगल माने दिस एंगल टा 60 थिला नाउ एग्जैक्ट हाफ हैला सो दिस विल बी 30 दिस विल बी 30 सो ए फिगर रे को गुडा को सेट देखा होची एटा 30 डिग्री आउ एटा 30 डिग्री ओके अच्छा सो नाउ क्लियर हे गला एफ बी एमिति ऐड करछि एटा 30 माने दिस इज तार ऑपोजिट दिस इज 30 डिग्री एंड एटा 30 माने दिस इज तार ऑपोजिट दिस इज 30 डिग्री now fb is equal to how much आछी fb जोड़ा आसीबो बीटा q1 q2 माने 10 into 10 10 into 10 by distance square means 0.2 रो square बीटा q1 q2 by r square similarly fc कोन आसीबो fc is equal to बीटा okay 10 into 10 into 10 whole by 0.2 रो square okay fb is equal to एथिकी fc is equal to एथिकी okay now look at fb और fc रो मैग्नीट्यूड सेम हैला so let आपको भी f द्वारा रिप्रेजेंट करबी और आपको भी f द्वारा रिप्रेजेंट करबी so this is a force ए मानकर हमें रिजल्टेंट फाइंड करबा नेट फोर्स फाइंड करबा सो कोन करबा जेमति कंपोनेंट बाहर करी करते सेमति कंपोनेंट बाहर करबा fb रो दिस कंपोनेंट हबो fb cos 30 एंड fb रो x कंपोनेंट ए पट को हबो fb sin 30 सेमति fc रो x कंपोनेंट ए पट को हबो fc sin 30 एंड fc रो y कंपोनेंट ए पट को हबो fc cos 30 ओके सो वेरी सिंपल fb और fc को रिजॉल्व कर देली नाउ नेक्स्ट पॉइंट कोन रिजल्टेंट x कंपोनेंट फाइंड करबा रिजल्टेंट x कंपोनेंट इज इक्वल टू देखो x एक्सिस रे fb और fc सेम अछि तेणु fb sin 30 और fc sin 30 इक्वल एंड ऑपोजिट हला सो rx इज इक्वल टू 0 सिमिलरली ry कोन हबो ry इज इक्वल टू fb cos 30 fc cos 30 दीटा जगह f नेबी सो f cos 30 मिसी कोन हला 2f cos 30 देन जेमिति मु बतैथिली सेमिति हमें रिजल्टेंट r फाइंड करि परबा नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट द नोट नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट द नोट Now pause the video and write the note.